using multi-valued variables. Okay, so ये क्या है, we'll see. When you work with variables in Ansible, it is common to work with multi-valued variables. Two types of multi-valued variables can be used: the array, also known as the list, and the dictionary, also known as the hash. Each of these has its own specific use cases. अभी इसके examples क्या है, list मतलब क्या है, array मतलब क्या है, we will see. In variable definition, a list, also known as array, is a key that can have multiple items as its values. ठीक है, key एक ही रहेगा and their values will be, the multiple values will be there for one single key. अभी एग्जांपल में समझ में आएगा आपको. Each item in a list start with dash. Individual items in a list can be addressed using the index number starting at 0, as in users 1, okay, which would print the key value pairs that are for Lisa. Okay, okay, okay. एग्जाम्पल बताता हूं, देन यू विल कम टू नो. ओके, ठीक है. द एग्जाम्पल इज, दिस इज लिस्टिंग शोज एन एग्जाम्पल वेरिएबल दैट इज डिफाइंड एज एन अरे. ठीक है, मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स. लेट मी क्रिएट अ फाइल एज मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स. ठीक है, just a variable file name, so I'm not giving yml here, only the variable file name is there. So अपने को मतलब easily identify करने के लिए I'm giving multi-valued as a name. Okay, inside this let me put as a users, and the first user is Linda colon username Linda, and home dir is slash home slash Linda. Okay, and shell slash bin slash bash. अभी what, this is the list. how key is one, users एक ही key है and values multiple है. values multiples कैसे, let me see. the another user is Tom, or let's say Robert. Okay, Robert, and username will be Robert, and home dir should be slash home slash Robert. Okay, and shell will be slash bin slash bash. Done. This is the second user, and the third user we can create as Sam. Sam colon username is Sam, home dir will be slash home slash Sam. Just a minute, guys. Okay, shell will be slash bin slash bash. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, की एक है, मतलब these all are users, बराबर है, तीनों भी यूजर्स है, राइट. बट द की इज, यूजर्स इज सिंगल की एंड द वैल्यूज आर मल्टीपल. समझ में आया, समझ में आया. Yes, sir. आएगा. Yes, sir. यस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, लाइक मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स में क्या रहता है, दो दो चीजें रहेंगी. एक क्या रहेगा, कॉमन वर्क विद मल्टी वैल्यूड, द टू टाइप्स ऑफ मल्टी वैल्यूड कैन बी यूज्ड, द अरे आल्सो नोन एज लिस्ट, एंड द डिक्शनरी. ईच ऑफ दीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक यूज केसेस. तो अभी ये वाला एग्जांपल देखने के बाद यू विल कम टू नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली. ओके, तो हमने तीन यूजर्स क्रिएट किए एंड विल यूज हैश. ओके, Sir, बोला. sir, Robert आणि ते R capital आणि the small letter काही फरक पडत नाही का? नाही, ते रॉबर्ट हे युजर्स मधला रॉबर्ट हे एक पॅराग्राफ आहे, म्हणजे ह्याचा चाइल्ड आहे, पण Okay. ह्याच्यामध्ये जे व्हॅल्यूज आहेत हे वेगळे व्हॅल्यूज आहेत. समजलं, हे रॉबर्टचं म्हणलं हे वेगळे व्हॅल्यूज आहेत. युजर नेम आपण स्मॉलच देतो, त्यासाठी स्मॉल दिलोय मी. हा, okay. Python, a dictionary also known as hash, is an ordered collection of items, a collection of key value pairs. In Python, dictionary is defined as myDict is equal to key 1 car, key 2 bike, because it is based on Python.
Okay, particularly useful in combination with task control structures such as loops because this allows you to iterate through the multiple value of variables. Using a square bracket notation to address multivalued variables. Okay. So this is the one way of what you call dictionary and array जे होतं ना आपलं तर one way of specifying the details. The other way is I'm just putting it over here just for your example. Users and again Linda. Here I'm not using dash. Okay. So this is the difference between what you call list and arrays. Sorry, arrays and wait, what is it? Can be used array and dictionary. Okay, array and dictionary. Hash in a variable definite list, also known as an array, is a key that can have multiple items as its values. Each item in a list starts with dash. Individual items in a list can be addressed using the index number. Okay. So this is called array. ये वाला जो हमने देखा था array वाला option है. And the second one that we are going to see is list. Just for your reference कि कैसे define करते that I am showing over here. Okay. It is just the definition. Linda and again here username Linda and home directory /home /Linda and shell :bin/bash. Okay. And again the other user is Robert. Robert में क्या है username Robert and home directory /home /Robert and shell /bin/bash. Again the third user is Sam : username is Sam, home dir is /home Sam and shell /bin/bash. So these are the two different ways that you can define multi-valued variables. ठीक है ये पहले वाला and the second one is this one. ठीक है. So I have just shown you the example, so that is why I written the same thing inside the same file. Okay, so I am just deleting these lines because I just wanted to show you कि ये दो तरीके से आप define कर सकते हो. ये पहला वाला जो था dash use किया इसने and the other one is directly list of users. So I'm removing these users from here. So we use only one. If you want to test it out, आप लोग खुद एक फाइल बनाओ जहां पे ये वाला syntax use करो and you can write it out. ठीक है? So I will ping you this syntax with you. ठीक है. Okay. Okay. So save this file now. Now if I want to execute this playbook, vi multivalued.yml. Okay, multivalued means multivalued variables in short. 1 2 3 playbook to show multivalued variable example. Host यहाँ पे कौन सा होस्ट देना अपने को ऑल देंगे अपन. वी आर नॉट गोइंग टू specifically looking for web group definition or the host definition, so I'm just giving it this way. And task : टास्क की जगह अपन फाइल क्रिएट किया ना तो vars_files. फाइल का नेम क्या था? मल्टीवैल्यूड वेरिएबल. ठीक है, ये वाला फाइल नेम था. विल चेक एंड विल रेक्टिफाई इफ दैट इज रॉन्ग. And this should be put it in dash format like array format. Define : and name task to print variable values, multi-valued variable values. Okay.
MSG में user and calling the variables will be like this one, users dot linda, पहला वाला जो था हमारा linda dot username, उसका यूजरनेम जो भी है वो डिफाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। हैज होम डायरेक्टरी users dot linda dot home dir and shell is dot shell, ठीक है। लेट मी सी, if you are using modules and expect the file to exist on the remote, see the remote on, okay, where file multivalued variable was not found, okay, अब हमने कुछ नाम गलत किया होगा। multivalued variable किधर है, कहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे है multivalued variables, ठीक है। तो multivalued VARIABLES, yes मिसिंग है ये इसमें, समझ यस में। So let me Yes, sir. add the yes. Oh, sorry. Yes. Now it will work. Robert, username Robert. Caps आणि smallचा प्रॉब्लेम आहे वाटते. Let me see. We were unable to read either. Oh, okay, okay, okay. पर लेकिन रॉबर्ट का नहीं लिखना जरूरी नहीं है। Multi-valued variable. What is missing here? So maybe you need to have this same thing, small and caps. Okay, let me run it again. Nahi, expecting a value line 1 column 1 character 0. Syntax error, loading while mapping values are not allowed in this context. The error appears to be in variable line number 713 elsewhere in the, okay, काय म्हणते हैं variables user, yes, users right है, and Linda username Robert username home directory shell. What is wrong Robert? username home directory shell. Okay Sam, तो कहाँ पे गलत हुआ, अपना कुछ गलत हुआ है क्या? ओ कोलन मिस हुआ है अपना, so this was the issue. If I do it now it will work. Okay, तो let me change it again to capital. अगर वो impact करेगा या नहीं that we will see. Yes, तो वो impact नहीं करेगा अश्विनी। So if we are keeping it as a capital and here we are giving the main username, so it doesn't matter whether you are ओके giving it a small or capital. Okay, this is just a heading. So okay fine. तो वो अभी if I do Ansible playbook multi-valued variables, sorry, dot yml, multi-valued dot yml, enter. So it should read the variable values and it should show the variable output. क्या बोलते हैं? The task includes an options with the undefined variables. The error was list object has no attributes, Linda. A list object has no attributes, Linda. Cloud migration line. Okay. हमने फाइल को भी कॉल किया ना यहाँ पे multivalued. Where's file multivalued variables बराबर है, नाम तो कॉल किया हमने users dot linda dot username. Users 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 Linda is there. काय म्हणते हैं?
The error was the task includes an option with an undefined variables, maybe elsewhere. Name task to print variables. Okay, let me put it this way. Then RM request is not installed. Okay, वो जरूरत नहीं है तो okay. Let me use the another syntax. Okay, एक मिनट रुको. Okay, yes. Calling should be users, जो हमने पहले यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट वाला. Users, Linda and username. आई थिंक द सिंटैक्स, ये दूसरा वाला जो सिंटैक्स, ये पहले वाला हमने जो एंटर किया था ये वाला सिंटैक्स, तो ये दूसरे वाले फॉर्मेट के लिए है. जो दूसरा वाला मैंने विदाउट हैश दिखाया था आपको, समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है बाद में. ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आई एम गोइंग टू शेयर इट दिस वीडियो. ओके, तो आप एक बार वो करके देखो, वो वाला फॉर्मेट रख के फिर करके देखोगे तो यू विल कम टू नो कि वही है क्या इशू. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड दिस वन and again this one close and this one close. Okay, and सर if सर I एक क्लोज करायचं राहिलं सर. कुठे कुठे युजर लिंडा युजर हां अजून आहे ना युजर नेम, इथे 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 इथे. ओके ओके, थँक यू. ओके, डन. बरोबर आहे, बाकी सब तो ठीक है. शेल लिंडा शेल. ओके राइट, वी हैव इट. अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा इट शुड वर्क. The task includes an option with an undefined variables. फाइल कहाँ पे है अपना? Multivalued variables. pi multivalued YML में wars underscore files right है. Files. Oh, okay. It is multivalued है तो मैं directory wars move multivalued wars. List object has no attribute Linda. List object has no attribute as Linda. Okay, let me where's, तो यहाँ पे आपको जो मैंने वैल्यूज पिंग की है वही मैं एक बार टाइप करके देखता हूँ. ठीक है, just to make sure whether this is causing the issue. Let me, okay. If I run it now, ओके, तो ये सिंटैक्स तो ले लिया इसने. अभी ये आउटपुट दे दिया हमको. ठीक है,
यूजर लिंडा हैज होम डायरेक्टरी होम लिंडा एंड शेल इज बिन बैश, बराबर है. So it was looking for that particular format. So let me change this format in multi-valued variables. जो हमने पहले यूज किया था वो सिंटैक्स यूज करेंगे. So what it will say, just let me see. Dot Linda username, right? समझ में आया? कहाँ पे गलत हुआ है हमारा? वो सिंटैक्स जो यूज किया था हमने वो गलत हुआ है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था. नॉट श्योर, मेरी गलती हो गई वो. ठीक है. shell user linda dot. Sir, this is used for arrays, man. वही एरेज और लिस्ट के बारे में कंफ्यूजन है. सो आई एम जस्ट चेकिंग इट Okay. आउट. जस्ट अ मिनट. Ansible multi-valued. ओके ओके. तो दो भी फॉर्मेट जो डैशेस यूज किया हमने उसको नहीं चल रहा है, लेकिन द अदर फॉर्मेट इट इज वर्किंग विथ. Definite in Python, dictionary values, also known as a hash, is an unordered collection of items, a collection of key value pairs. In Python, a dictionary is defined as my underscore dict is equal to key one car key. Okay, because it is based on Python. Ansible lets users use dictionaries as an alternative rotation to arrays. Though dictionaries are not as common in use as arrays, items in values in a dictionary are not started with a dash. Using dictionaries is one way. The alternative is to use a list. Listing shows an example. Okay. So the documentation, what it is saying is the first format which we use, right? The dash one. Usually that is not the appropriate way of defining it inside the Ansible, because Ansible uses Python. समजला? तर पायथॉन मध्ये जेव्हा तुम्ही डिफाइन करता तर सिंटॅक्स शुड बी लाईक दिस वन. हाऊ? आय विल शो यू. my underscore dict is equal to key 1 colon car a close and comma and key 2 colon bike. So this is what it is suggesting, but we do not want to use this one, and rather we use that option. Which one? The what you call without hashes. ठीक है. तो what I will do, मुझे थोड़ा और confusion है इसमें, so I will check on this and I will tell you about this one later. ठीक है. Exactly क्यों we were not able to use the dash format. समझ में आया? Both of you? Yes, sir. आया सर. होम डायरेक्टरी. ओके. वर्किंग विथ मैजिक. ठीक है, चलेगा. ये वाला जो है अभी के लिए टॉपिक ये खत्म करते हैं अपन. मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स एग्जांपल हमने तो देख लिया. हाउ वी आर पुलिंग इन द मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स इनसाइड द प्लेबुक, वो तो हमने देख लिया. सिर्फ जहां पे प्रॉब्लम है, जो सिंटैक्स हमने यूज किया था प्ले वेरिएबल्स के लिए, यहाँ पे डैश करके किया था, एंड दिस वन वी यूज्ड विदाउट डैशेस, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल चेक ऑन इट एंड आई विल लेट यू नो. ठीक है. बाकी तो प्लेबुक तो रन हो चुका है अपना. ओके. Okay, sir. ओके सर. चलेगा फिर गाइस, आज के लिए इतना ही. कल अपन दूसरा टॉपिक देख लेते हैं. ठीक है. ठीक आहे. ओके. समझ में आहे ब्रिजेश, अश्विनी? काही कन्फ्युजन आहे ह्याच्यामध्ये? Nice. ते एक सोडून, डैश एक छोड़ के बाकी कुछ कंफ्यूज हुआ है या फिर सब सही है, मतलब समझ में आया? समझ में आया. ठीक है ब्रिजेश. आया है समझ. ठीक है, चलेगा. प्रैक्टिस करो फिर. हाँ. ठीक Okay. है. ओके, बाय. बाय.